बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी हाँ, तो हमारे इम्तिहानात का सिलसिला चल रहा है। 9th क्लास 2 पेपर हो चुके हैं और अब हमारा पेपर है केमिस्ट्री का। तो जी हाँ, केमिस्ट्री के गेस हमने आपके साथ शेयर करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमारे इंग्लिश और बायोलॉजी के गेस जो हैं उन्होंने पंजाब के तमाम बोर्ड्स में धूमें मचाई हैं, तो इंशाल्लाह ये केमिस्ट्री का जो गेस है ये उनसे भी ज़्यादा रिलायबल है और आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने क्वेश्चंस कर लेने हैं, आपका पूरे का पूरा पेपर इंशाल्लाह इसमें से आएगा। तो जी, हो जाएं तैयार। हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि केमिस्ट्री के पेपर में कौन कौन से ऐसे सवालात हैं जो हमने केमिस्ट्री के पेपर के लिए तैयार करने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। हम आपका साथ सिर्फ 9th तक नहीं, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और उससे आगे भी हर मौके पर हमारा चैनल आपके साथ रहेगा। तालीमी लिहाज से आपकी मदद करता रहेगा, लेकिन ये मदद उस वक्त तक हो सकती है जब हम राबते में होंगे। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं अपने केमिस्ट्री के पेपर के आम सवालात। स्टूडेंट्स, हम इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं और आपको 9th क्लास केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम जो है वो इस वक्त दिखाई दे रही है। पिछली जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो हमारी, जिसमें हमने बोर्ड्स के जो मॉडल पेपर थे वो आपके साथ शेयर किए, उसमें इसको पूरी डिटेल से बता दिया गया था। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देखें, वो बहुत अहम है आपके लिए। उसका लिंक जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ नीचे, ताकि आप उस वीडियो को भी देख लें। मज़ीद आप इसको यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो तरतीब है ये किस तरह से है, ये आपको दिखाई दे रही है। आगे मज़ीद बढ़ते हैं बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने क्वेश्चन हिस्से की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें जी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप सुनते जाएं। डिफाइन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन एनी टू ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आगे देखें, ये 13 लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन के आगे यहाँ 9 लिखा हुआ है। तो ये इतने मरतबा बोर्ड में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये इस हवाले से लिखा गया है। उर्दू मीडियम वाले नेक्स्ट आगे देख लेंगे। तो डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, differentiate between nuclear chemistry and environmental chemistry, differentiate between organic and inorganic chemistry, differentiate between physical and chemical properties with examples. Question number 7, what is meant by element? Give one example, define symbol and valency with an example. Soft drink is mixture while water is compound, give the reason. How does homogeneous mixture differ from heterogeneous mixture? Differentiate between atomic number and mass number. Define relative atomic mass based on C12 मरतबा रिपीट हुआ है। डिफाइन इंपेरिकल फार्मूला एंड गिव इंपेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन एंड हाइड्रोजन peroxide. Define molecular formula and give one example. Differentiate between molecular mass and formula mass with examples. Question number 16, calculate the molecular mass of nitric acid. What is difference between atom and ion? Differentiate between caution and anion and give one example of each. Differences between molecule and molecular ion. Define free radical with two examples. Differentiate between homoatomic and heterotopic molecules. Differentiate between gram atomic mass and gram molecular mass, और डिफाइन एवोगैड्रो नंबर। तो जी इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनको देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पेरिकल एंड molecular formula, explain how chemical formula is written, define molecule and explain different types of molecule completely, write difference between compound and mixture। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 हो गया है जी।
चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। व्हाट इज प्लम पुडिंग थ्योरी, और व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड, डिस्क्राइब टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ canal rays, write properties of neutron. Write down two observations of Rutherford atomic model. Write two defect in Rutherford atomic model. Describe differences between Rutherford theory and Bohr's atomic. Write down two postulates of Bohr's atomic model. What is meant by quantum? Define electron configuration. Also give example. An element has 5 electrons in M shell. Find its atomic number. Differentiate between shell and subshell and give example. How many electrons can be accommodated in different shells of an atom? Write down the electronic configuration of following. ये जी ClNa और Al यानी क्लोरीन, सोडियम और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। डिफाइन आइसोटोप्स, नेम the isotopes of hydrogen, write down 3 isotopes of uranium, write down the isotopes of chlorine and diagram with diagram. Write 2 uses of isotopes. For what purpose uranium 235 is used? Define nuclear fusion reaction. Define carbon dating. For what purpose iodine 131 is used? Write 2 examples of radioactive isotopes for the treatment of cancer. तो आगे जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। Describe difference between Rutherford's theory and Bohr's atomic theory. Write down the uses of isotopes. How are cathode rays produced? What are their 5 major characteristics? Explain the production of canal rays and also explain its properties. ये हमारे 2 चैप्टर्स हो गए स्टूडेंट्स। 2 चैप्टर्स में ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी पूरा होता है एक, और शॉर्ट क्वेश्चन 5 पूरे होते हैं। चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सप्लेन डोब्राइनियर्स ट्राइएट, हाउ न्यूलैंड arrange the elements, define Mendeleev's periodic law, define the modern periodic table. What is difference between Mendeleev's periodic law and modern periodic law? What is meant by periodic function? What is meant by group and period in periodic table? आगे बढ़ते हैं जी। राइट एनी 4 properties of the long form of the periodic table. Define periods. How many periods are there in long form of the periodic table? Name the elements of first period of the periodic table. What is meant by atomic radius? Write its unit. Why does atomic size increase in a group? Why size of atom decrease from left to right in the period of periodic table? Define shielding effect. Describe its trend in a period. Define effective nuclear charge. Define ionization energy. Write down its trend. What is the trend of electron affinity in a group and period? Define electronegativity. Which element has the highest electronegativity? What is the trend of electronegativity in period? ये हमारा तीसरे चैप्टर हो गया। चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। Why noble gases are not reactive? Why atoms form bond? What is meant by octet rule and duplet rule? Define chemical bond. Write down names of its types. Differentiate between ionic bond and covalent bond. Why does sodium form a chemical bond with chlorine? Define double covalent bond and give example. Define bonding electrons. Define triple covalent bond and give example. Which type of covalent bond is formed in nitrogen molecule? What is dative covalent bond? Explain with one example. Differentiate between lone pair and bond pairs.
of electrons. Question number 12. Differentiate between lone pair and bond pairs of electrons. Difference between non-polar covalent bond and polar covalent bond. Why does a covalent bond become polar? How a metallic bond does is form with give example. What is intermolecular forces? Give example. What do dipole forces mean? Define hydrogen bonding and give example. Ice floats on the surface of water. Give reason. Write two properties of ionic compounds. Ionic compounds are solid. Explain. Write two properties of covalent compounds. Why metals are good conductors of electricity. ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया जी. लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. Write the characteristics of ionic compound. What is meant by hydrogen bonding? Write down the characteristics of hydrogen bonding. Write a note on polar and non-polar covalent compounds. What is metallic bond? How is it formed in metals? ये जी हमारे 4 चैप्टर हो गए, 4 बाकी हैं, तो मजीद आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ. सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं. Write two properties of gases. What is difference between diffusion and effusion? Define standard atmospheric pressure and write its unit. Define pressure and write its unit. Why value of gas decreases with the increase of pressure? Why the density of gas increase on cooling? Why the density of gas is less than liquid and solid? Define Boyle's law for gases. What is meant by absolute zero? What is Charles' law? Write its equation. Convert 30 degrees Celsius to Kelvin temperature. Define evaporation and give an example. What are the two factors on which evaporate depends upon? Why does evaporation causes cooling? What is meant by condensation? Define vapor pressure and explain the effect of temperature on it. Differentiate between boiling and melting point. What is the effect of external pressure on boiling point? Define freezing point. Why solid show rigidity? Differentiate between crystalline and amorphous solid. Define allotropy and give two example. Define transition temperature. Give example. जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन है जी. स्टेट द चार्ल्स लॉ. डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट. व्हाट एक्सप्लेन इट्स फैक्टर. व्हाट इज वेपर प्रेशर एंड हाउ इज इट अफेक्टेड बाय intermolecular forces. Define operation. Also explain the factor affecting on operation. चैप्टर नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं जी. चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. डिफाइन सॉल्यूशन विद एग्जांपल. राइट द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशन एंड प्योर लिक्विड. व्हाट डू यू मीन बाय aqueous solution? What is difference between solution and aqueous solution? What is difference between solute and a solvent? Write difference between saturated solution and unsaturated solution. Define supersaturated solution. Describe difference between concentrated solution and dilute solution. What is solid liquid solution? Explain with example. What is solid solution? Give two example. What is meant by mass percentage, m by m percentage. So define molarity and write its equation. How one molar solution of NaOH is prepared. Define solubility. What is meant by like, dissolve like. Explain with example. Explain the effect of temperature on solubility. Why test tube become cold when KNO3 is dissolved in water? What is meant by colloids? Give two example. What is Tyndall effect? On what factor it depends? What is meant by suspension? Explain it with an example. Why we stir paints
thoroughly before use. Compare any two properties of solution and suspension. आगे जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. What are types of solution and give its example, explain effect and temperature on solubility. What is molarity and give its formula to prepare molar solution. Make a comparison among solution, suspension and colloid. ये हमारे जी 6 चैप्टर्स हो गए. 7वें चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं. मैं क्वेश्चंस पढ़ता जा रहा हूँ, आप उर्दू में देख सकते हैं, और मज़ीद अगर कोई कंपोजिंग की मिस्टेक है तो वो भी आपको पता होगा. तो अब यहाँ ये देखना है हमने, ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है. डिफाइन, ये आगे जो दिया हुआ है 7 नंबर, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि ये इतने मरतबा रिपीट हो चुके हैं बोर्ड में. डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. What are spontaneous and non-spontaneous reaction? Differentiate them. What is difference between oxidation and reduction reaction? Write down any two example of oxidation reaction in the form of chemical reaction. What is difference between valency and oxidation state? Calculate the oxidation number of chlorine in KClO3. Calculate the oxidation number of sulfur in H2SO4. इनके फार्मूले का. Define oxidizing and reducing agents with examples. Define redox reaction. Give an example. Define electrochemical cell. Write the names of its types. Define oxidation state with example. What is difference between strong and weak electrolyte? What are electrolyte cell? What is difference between electrolytic and galvanic cell? What do you know about salt bridge? Which solution is used as an electrolyte in Nelson's cell? What is difference between corrosion and rusting? What is the role of oxygen in rusting? Write its one advantage. What is meant by electroplating? Which salt is used as electrolyte in chromium electroplating? How electroplating of zinc is carried out? हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Write down the rule of assigning oxidation number. What is meant by electrolyte? Write down its types. Discuss the redox reaction taking place in the rusting of iron in detail. How electrolytic refining of copper is carried out. लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, तो इसकी तरफ बढ़ते हैं. मैं भी काफ़ी बोल चुका हूं और कोशिश कर रहा हूं जल्दी जल्दी बताने की, ताकि टाइम जो है वो मिनिमम हो. Short question. Define metal and give two example. Write two physical properties of metal. Write down two important chemical properties of metal. Write any two uses of sodium. What is meant by malleable and ductile metals? Write use of magnesium. Why sodium metal is more reactive than magnesium? Compare two physical properties non-metal of metals and non-metals. ये composing की थोड़ी सी mistake हो गई है. Write two uses of calcium. Why does reactivity of metals increase down the group? Define metallic characters. What is relation between electropositivity and ionization energy? What is electropositivity? Explain with example. What is difference between steel and stainless steel? Write down two uses of gold. Write two uses of silver. Write two uses of platinum. Write two physical properties of nonmetals. Which factor affect the non-metallic character? Define halogens. Also give example. Why fluorine is more non-metallic than chlorine? What is the importance of oxygen and carbon dioxide for plants and animals? लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जी. Define metals. Also write four chemical properties of metal. Write down four uses of silver in daily life. जी स्टूडेंट्स,
ये हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं केमिस्ट्री के। आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से करना है और इस दफ़ा जो आपका पेपर है वो इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस में से आएगा। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और अपना नाम रोशन कीजिए, अपने वालिदैन का नाम रोशन कीजिए, अपने इदारे का नाम, अपने असातिज़ा का नाम रोशन कीजिए। पूरी मेहनत कीजिए, इन चीज़ों को तैयार कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जी हाँ, वीडियो का इख्तिताम है। आखिरी बात, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।